As Russian President Vladimir Putin wraps up his New Delhi visit for the 23rd annual summit, the world tries to decode emerging signals from his Big Bang meet. This is an 8-decade-old partnership where mutual trust has been repeatedly tested amid shifting global alignments, sanction pressures, and an emerging turmoil in India-US ties. The summit images are a message to the world for India's wider strategic autonomy. India has trade problems with the US but can sit and talk, border issues with China but dialogue bridges and trade paths are open. And with Russia, it's a relation that both can count on. The following key watch points outline what could shape next phase of India-Russia relationship. Though remaining in the realm of ambiguity, Putin has underlined the fact that Russia would continue to supply energy requirements to fuel India's growing demands. We are also seeing successful partnership in energy. Russia is a reliable supplier of oil, gas, coal, and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. Of course, the bilateral interaction in energy does not limit to that. The international transport routes are being worked upon, including the project to create north-south transport from Russia or Belarus to Indian Ocean coast. This signals development of Chennai-Vladivostok corridor. We are working with our Indian partners to build new, effective international transport logistic routes, including the projects to create an international north-south transport corridor from Russia or Belarus, to the Indian Ocean coast. There are large opportunities for bilateral trade due to the broadening of the Trans-Arctic transport corridor infrastructure, including its main artery, the Northern Sea Route. दोनों पक्ष यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए के शीघ्र समापन के लिए प्रयास कर रहे हैं। कृषि और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हमारा करीबी सहयोग फूड सिक्योरिटी और किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि इसे आगे बढ़ाते हुए अब दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। Additionally, Putin mentioned the early conclusion of India-EU FTA. This is a credible plan for bilateral trade growth via Eurasian Economic Union or a new payment or settlement mechanism. The growth of Russian-Indian commercial links would be helped by the creation of a free trade zone between India and the Eurasian Economic Union. We are already conducting work on the corresponding agreement. One of the most important statements from Putin says that 96% of bilateral trade is now settled in national currencies, reducing external dependency. This can actually be a game changer in mutual trade as Western sanctions complicate dollar-based trade. I would like to note with satisfaction that our countries are gradually moving to the use of national currencies in mutual settlements. The share of these national currencies is already 96% in commercial deals. We have established resilient channels of credit, financial, and interbanking cooperation. Russian economic operators have broadened the sphere of use of Indian rupees, which we receive from the fulfillment of export contracts. Russian rubles are being used to provide loans for large joint projects.
Experts expected Russia to have discussed delivery of additional S-400 air defense batteries, maintenance support, upgrades to existing Russian origin platforms like Su-30 Kilo-class submarines and Su-57 stealth fighter and upgraded BrahMos missiles. But nothing has come out in public domain except the affirmation that both countries aim to deepen military collaboration. Closely cooperating in the military technical sphere, our country for the last half a century has been helping to arm and modernize the Indian Army, including the air defense forces, aviation and the Navy. In general, we are undoubtedly satisfied with the results of the negotiation we just had. President Putin announced that Russia is collaborating with India at Kudankulam, the largest nuclear plant in India. 2 of the 6 reactors at this nuclear plant in Tamil Nadu are already operational with Moscow. Meanwhile, PM Modi held that cooperation in critical minerals is also essential. We are also conducting a flagship project to build the largest Indian nuclear power plant, Kudankulam. 2 out of 6 reactor units have been already connected to the energy network and 4 are still under construction. Getting this nuclear power plant to full power output will give an impressive contribution to the energy requirements of India. It will help supply Indian enterprises and houses with cheap and clean energy. शिप बिल्डिंग में हमारा गहरा सहयोग मेक इन इंडिया को सशक्त बनाने का सामर्थ्य रखता है। यह हमारे विन विन सहयोग का एक और उत्तम उदाहरण है, जिससे जॉब्स, स्किल्स और रीजनल कनेक्टिविटी सभी को बल मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा भारत रूस साझेदारी का मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज इंडस्ट्रीज में हमारी साझेदारी को ठोस समर्थन मिलेगा। New job opportunities for young Indians collaborating skilling and training could help both nations to open doors for Indian workers' migration to Russia, given Russia's labor shortages. मैन पावर मोबिलिटी हमारे लोगों को जोड़ने के साथ साथ दोनों देशों के लिए नई ताकत और नए अवसर क्रिएट करेगी। मुझे खुशी है कि इससे बढ़ावा देने के लिए आज 2 समझौते किए गए हैं। हम मिलकर वोकेशनल एजुकेशन, स्किलिंग और ट्रेनिंग पर भी काम करेंगे। हम दोनों देशों के स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और खिलाड़ियों का आदान प्रदान भी बढ़ाएंगे। When Putin says we will continue uninterrupted fuel shipments to India, it sends a strong message across the globe that both nations value strategic autonomy and won't align solely to Western pressure. Russia and India are conducting independent and self-sufficient foreign policy together with the like-minded countries in BRICS and SCO, and from among other countries of the global majority. We are promoting the processes of forming of a more just and democratic multipolar world order. We are defending the main principles of the international law enshrined in the Charter of the UN. Among them, the right of any country for its own way of development and the preservation of their cultural civilizational identity, respect for sovereignty, careful balance of interests of all participants of the world community. मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा
हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। मैं एक बार फिर आपको और आपके पूरे डेलीगेशन को भारत यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्पासिबा। Strong condemnation of terrorist attacks came from Putin as he affirmed the continued partnership with India against global terrorism. On the global peace front, Modi reiterates India is not neutral but on the side of peace. संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स, SCO तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, फ्रेंड्स, आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। Overall, Putin's India visit goes far beyond ceremonial optics. The outcomes signal how New Delhi plans to navigate a turbulent geopolitical landscape while safeguarding long-term energy, defense, and economic interests. As the world moves towards multipolarity, if these agreements solidify, the summit could mark a major reset in India-Russia ties for the post-Ukraine, post-sanctions era.